Good evening, everyone. Good evening, all. Thank you for joining. We are also live on YouTube. So, if you want to share the link with your friends, you can also share it with your friends. We are also live on YouTube. जिनको भी join करना है on YouTube live, you can join on YouTube. Because after some time, I'll not be admitting people in between on Zoom. तो जिनको भी join करना है, वो YouTube में भी join कर सकते हैं. Good evening, everyone. Okay. Okay, we'll just wait for a minute so that everyone joins and then we can start the session. Okay. Okay, I hope all of you can see my chart. सबको मेरी chart दिख रही है? You can just type a yes if you can see my chart. Okay, thank you. We still have people joining. Okay. All right. So we'll start. So how many of you, traded on the VRS stocks? Let's start with VRS first. हम पहले VRS से start करते हैं, उसके बाद आगे के stocks में चलते हैं. तो आप में से कितने लोगों ने VRS के stocks में trade किया in the last couple of days? Okay. All right. So Tata Motors, let's see the stocks that were there in VRS. So Tata Motors, they
E-Clerks was there, Tata Motors was there, Prince Pipe was there, Leighton View was there. ये सारे stocks थे जो yes, yes. Okay. So Tata Motors ने already, I think, 5% returns दे दिया है. Some of you were concerned कि Prince Pipe ने आपने खरीदा and then it went down. देखिए VRS stocks में एक चीज I would like to make it very clear कि VRS stocks में आप वो rules हमने जो लिखा है वो पढ़िए. VRS stocks में there is no stop loss. Right? Yeah. So yeah. So I would see again there are people joining in, unfortunately. Okay. So I would like, I would like to mention that in VRS stocks, there will be little bit of delay. कुछ stocks में कुछ delay रहेगा. Stop losses आपको अगर लगाना है तो वो आज हम लोग सीखते हैं कैसे लगाना है. When we are doing the scalping strategy, we can check on that. There are still people joining in. So patience रहना है. You have to be patient in VRS stocks. आपको तुरंत शायद ही मिले. लाइक बहुत सारे लोग अगर टाटा मोटर्स देखेंगे और सोचेंगे कि टाटा मोटर्स जैसे उनको चाहिए रिटर्न्स एक ही दिन में, शायद नहीं होगा. लाइक प्रिंस पाइप्स ऑब्वियसली 3 दिन हो गया है अभी लेकर के. सो वी आर स्टिल जस्ट अबाउट few rupees above the cost. So patience is important. That is the key for the stocks. So wait करिए, you will get your returns. अगर आपको लग रहा है कि yes, Bajaj Auto moved good. But अगर आपको लग रहा है कि आपको stop loss लगाना है तो 1% stop loss लगा के आप wait कर सकते हो. You can keep 1% stop loss and you can wait. Okay. Okay. Now there are few more stocks that are going to get activated. I have already given you the levels. मैंने आपको emphasis के levels दिए हुए हैं, which is 2, 2, 3, 4. Emphasis I have already shared with you the levels, that is 2, 2, 3, 4. उसके अलावा we have already shared CRISIL का level is there. आप note कर लीजिए. CRISIL का level है 3175. Emphasis I have already shared the levels. CRISIL is 3175. GR Infra is also shared 1282. ये हमने already share किया था. GR Infra, CRISIL and Emphasis. This is already shared. Okay. So these are the levels that are there for VRS. So आप उसको note कर लीजिए. These are the levels for it's already shared. वो already हमारे reels में है. आप उसमें से check कर सकते हो. These are the levels that are there for these stocks. Now हमने कल अदानी के levels भी बनाए थे. We had also shared Adani levels. Adani के levels हमने already share किए थे for Adani, some of the Adani stocks. But there is also, I think, Ambuja Cement or ACC was something that we have not shared. So I will share Ambuja Cement and ACC also in this session.
आप ये अंबुजा सीमेंट और एसीसी के लेवल्स आप नोट कर सकते हो। या okay. So I'll share with you Ambuja cement levels. So this is on a daily chart. Ambuja cements, you can make a note. I will not make a separate video now for Ambuja cements because abhi on the, we have already sharing it now in live. So I will not make a separate video for it. So 441 is the magic level for Ambuja cement. So that is 441. 441 is the magic level for Ambuja cement. Okay. Now the strong bear levels. Let's see the strong bear levels. So 381 below is okay. 381 is a strong bear level. So 381 is a strong bear level. जो already मतलब it is just above 381. जो close है, that is just above 381. Let me also see the low. Okay. If 381 के ऊपर sustain करेगा, so contra trade, I hope all of you are aware of the contra trades that we talk about. So अगर 381 के ऊपर sustain करेगा, then 411 will be the 411 will be the sell below level. So जिनको भी हमारे magic levels पता है, so this is 411. So if it sustains above 381, 411 and 441 will be the levels. 441 is the magic level. So let me just change the color. 441 is the magic level. Yeah, 441 is the magic level. Buy above will be 471. This is 471. Yeah. So so 470 above अगर trade करेगा, that is a strong bull level, and 500 के above will be the bull run जो शुरू होगा, that is above 500. So these are the levels for Ambuja cement. These are the levels for Ambuja cement. Okay, so if you want to take a contra trade, ये जो 380 का जो levels है, this should not be breached. So कल अगर market 380 के ऊपर trade करेगा, if market trades above 380, then आप एक छोटा सा stop loss लगा करके you can buy it as a contra trade, but stop loss is very important. This is not a buy or a sell recommendation in any of these stocks. Price action के हिसाब से आपको करना पड़ेगा. So 380 is a strong bear level. 380 के नीचे sustain करेगा, तो then 315 is the next target on the downward side. So this is for Ambuja cement. So any questions on? Yeah. So the below 381, 315 is the target. 315 is the target below 381. So it is like a deep cut. Below 350. Yes. 381 के नीचे it is 350. So any questions on Ambuja cement? Three 381 के below sustain करेगा, तो the target is 350, 315, 315 is the target if it sustains below 381.
If it trades above 381, आप यहाँ से you can take a contra trade. If it trades above 381, you can take a contra trade, and the target will be 411. Then 441 is the magic level. Buy or sell के लिए important level is 441. Buy or sell का important level is 441, and bull level is 471. This is for Ambuja Cement. Bull level is 471 and strong bull is 500. So these are the targets for Ambuja Cement. I hope it's clear for everyone. Clear for everyone? Okay. Chaliye. So let's go on to the next, which is ACC. Okay. ACC का magic level है 2089. 2089 is the magic level for ACC. So magic level, I'll make it as yellow. आप सबको पता है magic level कैसे trade करना है. So I'll not spend more time on magic level. So 2089 is the magic level for ACC. 1980 is the sell below level. 1980 is the sell below level. And 1872 is the strong bear level. 1872 is the strong bear level. ये भी same, this is also same. It is just trading above its strong bear level. 1872 अगर breach करेगा तो next support is 1628. 1872 if it is breached, the next support is 1628. So it is just trading above 1872. तो यहाँ पे भी contra entry का contra trade का chances है. 1872 के above अगर trade करेगा, then there is a chance of a contra trade. उसके targets आपको आएंगे 1980. Magic level is 2089. अभी bull level is 2198. This is 2198. This is 2198. Okay, and the strong bull level is 2307. So these are the levels for ACC. These are the levels for ACC. Okay. अभी ACC के जो levels है, these are valid till 10th of March. ये जो levels है, these are valid only till 10th of March. Okay, please understand. ये levels आपका 10th of March तक ही valid है. These are valid only till 10th of March, and Ambuja Cement is valid till 28th of March. Ambuja Cement का levels है, ये these are valid till 28th of March. Okay. Any questions on Ambuja Cement and ACC? I thought I'll just cover these two also because ये दो रह गए थे कल के हमारे जो अदानी के stocks में, ये दो stocks रह गए थे, तो I just thought we'll cover it in live today. Okay, clear? इसमें कुछ doubts है? Okay. Now stop losses are something that you will have to manage. ये trade वगैरह लेने के बाद please हमें think करिए कि क्या करना चाहिए हमारा, कैसे उसको hold करना चाहिए and all that. Please not fingers for stop losses. That is something you will have to manage on your own. I have already given you the levels. Okay. So VRS stocks and all these Adani ke stocks along with Ambuja and ACC, these will be the stocks in focus at least in the next, coming month. Okay. Fine. Now let's go on to the, main topic that we have all come in today for. So, yes. So most of the people have this question कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें buy करना चाहिए कि sell करना चाहिए. This is the question that most of you have asked us in multiple, in multiple sessions. आप लोगों का यही question रहा है कि buy करना चाहिए कि sell करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा. Now I'll just give you
I'll just give you I'll just give you a brief कि आपको कैसे पता कर आप कैसे पता कर सकते हो whether it is buy or sell. Now please understand this is not a foolproof strategy. This is just a intraday strategy. आप intraday में ये use कर सकते हो, ये complete foolproof strategy नहीं है. You have to follow it with the stop losses strictly, otherwise this will also backfire. Any strategy for that matter, नथिंग इज फुल प्रूफ मार्केट में. आपको हर एक स्ट्रेटजी में आपके स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए. विदाउट योर स्टॉप लॉस नन ऑफ द स्ट्रेटजीज विल वर्क. बट आपका जो इनिशियल प्रॉब्लम है विच सेज कि ये बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, हमारे लेवल से हम जो लेवल्स डालते हैं उसमें से आपको क्या ये मैजिक लेवल, जैसे मैजिक लेवल है, मैजिक लेवल से बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर इंट्राडे का जो हम लोग 199 का जो लेवल्स देते हैं इंडेक्स के डिसाइडिंग लेवल, ये लेवल से बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए. दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ यू हैव आस्क्ड मी. उसके लिए एक सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ. ऑब्वियसली आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल आना चाहिए, बट अगर वो सब कुछ नहीं आता है और आपको खाली अगर एक इंडिकेटर के तौर पे जाना चाहिए, अगर आप एक इंडिकेटर को फॉलो करोगे तो उससे आप कैसे काम कर सकते हो ये बता रही हूँ मैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं है. इसमें आपको अगर ट्रेंडिंग मूव नहीं है और अगर मार्केट बार बार ऊपर नीचे करता रहेगा तो ये आपका स्टॉप लॉसेस करेगा. तो दिस इज अगेन नॉट अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी. ये आपको यूज करना है विथ योर स्टॉप लॉसेस इन प्लेस. सो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आई हैव एडेड द 20-day मूविंग एवरेज एंड द 50-day मूविंग एवरेज. ठीक है, मैंने मूविंग एवरेजेस ऐड किया है, 20-day का मूविंग एवरेज और 50-day का मूविंग एवरेज ऐड किया है. And this is a daily time frame. Okay, ये जो ग्रीन में जो है that is the 20-day moving average, रेड में जो है that is the 50-day moving average. आप अपने आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में ये दो मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हो. दीज आर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ईएमएस मैंने ऐड किया है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है. दीज आर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ऐड द 20-day and the 50-day मूविंग एवरेज. देन आपको क्या करना है, गो ऑन टू अ 15-minute टाइम फ्रेम. इसको छोटे टाइम फ्रेम पे मत यूज करिए, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारे विपसॉज आएंगे आपको. इट विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर इंडिकेशन. आपको क्या करना है, गो टू अ 15-minute टाइम फ्रेम. नाउ 15-minute टाइम फ्रेम पे अगर आपका प्राइस ये जो 20-day मूविंग एवरेज के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, जैसे कि परसों के दिन का अगर मैं एग्जांपल लूं, give me a minute. Okay, so ये जो हमारे लेवल्स थे मंडे के, फ्राइडे के लेवल्स आई एम जस्ट चेकिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट. लाइव एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाऊंगी तो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. या सो 42,162 वाज द level for Friday if I'm not mistaken. No, that was for Wednesday I think. हाँ, Wednesday का लेवल था 42,162 जो हमने आपको लाइव में दिया था. या 4755. दिस वाज अ लेवल दैट हमने हमारा टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था फॉर 27th, राइट? यस, फॉर 27th. 4755. Now this is the chart of Bank Nifty. This is the chart of Bank Nifty. 4755 was the level. आपको क्या करना है? You simply draw a horizontal line at 4755. This is the level that we had given you, right? This was 4755. So this was the level that we had given you, intraday level that was given to you for Friday. Market अगर आपका 20 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, इफ इट इज सस्टेनिंग बिलो द 20-day मूविंग एवरेज, जब तक ये 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस नहीं जाएंगे तब तक आप उसको सेल में रह सकते हो. बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन थी, हम ये कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट सेल में है कि बाई में है?
आप एक सिंपल सा आपका लेवल मार्क कर दीजिए, आप उसको 15 मिनट चार्ट में ला दीजिए, और जब तक प्राइस ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है आप उसको सेल कर सकते हो। और प्राइस अगर नीचे आएगा और बहुत दूर जाएगा, 20 डे मूविंग एवरेज से अगर बहुत दूर जाएगा, तो एक बार इट विल कम बैक टू टच द 20 डे मूविंग एवरेज। तो जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज के पास आता है और उसके ऊपर सस्टेन अगर नहीं करेगा, तो वापस आप वहां से एक सेल ले सकते हो और वहां से वो नीचे ही आएगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे के मूविंग एवरेज के बेसिस पे। आप ये डिफाइन कर सकते हो कि मार्केट उस दिन के लिए बेरिश रहेगा कि बुलिश रहेगा। और अगर वो मूविंग एवरेज से काफी दूर है, जैसे अगर प्राइसेस बहुत दूर है, ये देखिए ये बहुत दूर है, प्राइसेस आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी 20 डे मूविंग एवरेज। अगर बहुत दूर है और आप अगर ऑप्शंस कर रहे हो, तो एक बार यहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस विल कम बैक अगेन टू टच दी 20 डे मूविंग एवरेज। और अगर वो टच करके सस्टेन नहीं करेगा तो वापस गिरेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये दिस वाज द फर्स्ट डे, 25th को हमने जो लेवल्स दिए थे वहां से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया, और ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन ही नहीं किया। वहां से इट हैज बीन जस्ट फॉलिंग। और फॉल होने के बाद अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, तो आपको एक बार जब दूर जाता है, आपके मूविंग एवरेज से जब बहुत दूर चला जाता है, तो एक बार आपको बुक कर लेना चाहिए। ये वापस अपने मूविंग एवरेज के पास जाएगा, वापस वेट करिए पेशेंस के साथ, एक्स्ट्रा कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मूविंग एवरेज पास में जाएगा और वहां अगेन वो सस्टेन नहीं करेगा उसके ऊपर, तो आप वापस एक सेल ट्रेड ले सकते हो, एंड वहां से फिर मार्केट जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आप उसको सेल ट्रेड ले सकते हो। अभी आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? स्टॉप लॉस आप लगाओगे आपका 50 डे का, ये जो रेड लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, और जिनको भी अगर कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आता है या कैंडल समझ में आता है, आप उसको भी यूज करके ट्रेड ले सकते हो। बट जब तक प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तब तक मार्केट आपका नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अभी ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज करिए। 5 मिनट्स में बहुत सारे विप्सॉज आएंगे। जो लोग जिनको 5 मिनट्स में ट्रेड करना आता है, या फिर जिनको कोई इश्यू नहीं है विद 5 मिनट्स, और जो स्कैल्पर्स है, आप ये 5 मिनट्स में भी यूज कर सकते हो। बट जिनको पता नहीं है प्राइस एक्शन, और जो बार बार हमें पूछते हैं कि हमें ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ से कैसे ट्रेड ले, आप 15 मिनट्स का यूज करिए, 5 मिनट्स में यूज मत करिए, क्योंकि 5 मिनट्स में काफी बार आपको विप्सॉज आएंगे। Okay, so this is how you trade based on a 20 minute and a 20 and a 50 moving average. इसके साथ अगर आप चाहे तो आप अपना वीवैप भी ऐड कर सकते हो। अगर आप वीवैप भी ऐड करोगे तो भी आपको एक उसमें कंफर्मेशन मिलेगा। वीवैप के साथ भी आप एक ट्रेड ले सकते हो। अभी ये देखिए, दिस इज द सेम पैटर्न दैट हैड फॉर्म्ड in Tata Motors. This is the same pattern that is formed in Tata Motors. टाटा मोटर्स में भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर आपको करना था, वीआरएस के स्टॉक्स जैसे अगर आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे बजाज ऑटो में भी सेम था, अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो बजाज ऑटो, उसमें भी सेम पैटर्न था, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो। तो अगर आपके जो भी वीआरएस के स्टॉक्स है उसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे कि 20 और 50 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करेगा, वहां पे भी आप एक ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही 20 और 50 के ऊपर ट्रेड सस्टेन करेगा, तो यू कैन गो लॉन्ग कीपिंग अ स्मॉल स्टॉप लॉस। सेम विद बजाज ऑटो ऑल्सो, बजाज ऑटो में भी सेम पैटर्न था। जब हमने आइडेंटिफाई किया था और आपको वीआरएस में दिया था, तभी सेम पैटर्न था, 20 और 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। जैसे ही 20 और 50 के ऊपर सस्टेन करेगा, वहां से आप डायरेक्ट यू कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड। ये आपको इंडेक्स में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करेगा, हर एक इस पे काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल में 20 और 50 लगाइए, इसके साथ आप वीवैम्प लगाइए। वीवैम्प इज आल्सो एन इंडिकेटर व्हिच टेल्स यू कि वेदर यू कैन गो लॉन्ग और शॉर्ट। इसके साथ वीवैम्प भी आप लगा के देखिए, जब तक प्राइस वीवैम्प के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज हाउ यू ट्रेड बेस्ड ऑन अ 20 एंड अ 50 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, किसी को कोई डाउट है ऑन 20 एंड 50 डे मूविंग एवरेज?
आप वीवैम्प भी साथ में लगाइए. You place your वीवैम्प also on the chart, and with the वीवैम्प also you can take a trade. अगर वीवैम्प के नीचे अगर प्राइस है तो you will be able to वीवैम्प के साथ साथ आप इसके ये जो एवरेजेस है उसके साथ साथ आप वीवैम्प भी लगाइए, उसके साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो. Any questions on this? Now, जो लोग भी जिनको भी अच्छा आता है, like those of you who are fast scalpers, जिनको 5 minutes time frame में you can जिनको भी 5 minute time frame पे ट्रेड करना आता है, जो भी प्रोफेशनल्स हो, जिन्होंने भी काफी हद तक ट्रेड किया है, आप उसको 5 minutes में लेके जाइए और 5 minutes में करिए. जो लोग न्यूबीज है, आप पहले उसको 15 minutes में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप उसको 5 minutes के लिए जा सकते हो. इसके साथ साथ आप वीवैम्प भी लगाइए. वीवैम्प आल्सो विल गिव यू अ गुड इंडिकेशन. Index में it will come only in future chart, but in stocks it will come in all the chart, all the stocks में वो सब में आ जाएगा. VRS के stocks का already we have given, we have already shared VRS stocks के reels. आप please वो check कर लीजिए. Let's not waste time now on those stocks. GAN is out of the, it is not in the purview of today's discussion. Today we have discussed only about how to take a trade. Scalping के बारे में हम बात कर रहे हैं today. GAN is out of concept. Okay. So any questions on the scalping? Because this is a common question that everybody comes up with. बहुत सारे questions इसी पे आते हैं कि ज्ञान का जो भी आई मीन लेवल्स हम देते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चंस यही आता है कि हम इसको कैसे कर पाए, हम इसको बाय करें या सेल करें. वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई वेदर यू कैन बाय और सेल. अभी काफी दिन से, 2 दिन से तो काफी सारा इट इज गैपिंग डाउन. सो अगर आपको पता करना है कि ये इसमें ट्रेड कैसे लेना है, आप अपना 2050 लगाइए, उसके साथ वीवैप लगाइए, and then you will be able to identify your trades. The same thing you can do it with stocks also. ये same चीज आप अपने stocks में भी करिए, index में भी करिए. Now index में future के chart में ही आपको वीवैप दिखेगा, आपको spot के chart में वीवैप नहीं दिखेगा. Stocks में आपको सारे stocks में वीवैप दिखेगा. Okay. Any questions, guys? Any questions on this? जो लोग YouTube में लाइव है, आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो. Those of you who are live on YouTube, if you have any questions, please ask. Anybody has any questions? Okay.
I'm just waiting for a while for people who are on YouTube to put their questions. Good evening to everyone who's on YouTube. Namaste Chandan ji. Hi Sushant ji. Hello Narendra ji. Just give me 5 minutes. I'm just taking questions from people. Okay. Adani Enterprises long-term holding view क्या है आपका other than VRS? Adani Enterprises. Good evening, Rajit ji. Adani Enterprises for now, it is like a falling knife. So I will request all of you to be cautious and trade with the levels. Now, obviously, there is a saying in the markets which says, when everybody is, you get cautious when people are greedy, and you become greedy when people are cautious. Obviously, that is something that is there in the market. So उस हिसाब से देखा जाए तो unless I see a reversal, I will not enter right now. Yes, there is from an investment perspective, is Ambuja Cement या फिर Adani Port. I think I will look at it. Adani Wilmar is something I will look at, but I will wait for a reversal to come and then only enter. जब my analysis gives me a go ahead, तब मैं जाऊंगी. But till then, I will be a little cautious. I'll follow the GAN levels for now. And I'll also try and see if there is any reversal dates that are showing up. Agar wo hai, to dekhenge. Otherwise, I'll wait for the levels to confirm. Can we use 5 EMA? See, I use 20 and 50 basically if I am in doubts. So that's the reason I showed you 20 and 50. Aap jo bhi comfortable for whichever EMA you are comfortable, you can use. Now 20 and 50 also helps you to identify. अगर आप एक चार्ट लोगे, कोई भी अगर आप एक चार्ट लोगे, आप गलत नहीं जाओगे. Like for example, if I take a 2-hour chart of Bank Nifty, right? So if you remember, we had tweeted that we are not bullish on Bank Nifty. हमने काफी टाइम से बोला that we are not bullish on Bank Nifty. So if you look at Bank Nifty, 20 and 50 had already, given a confirmation because they were not going. It was not the prices were not going above and sustaining at that rate. So based on this, आप एक अपना view भी बना सकते हो whether the markets are going to be bullish or bearish. अभी जैसे on a 2-hour time frame, it clearly tells you that यहाँ से market is not ready to go up. So आप when you're following a 20 and 50, it gives you a broader view. अभी 20-50 2-hour time frame में अगर negative है तो आप sell trade ज्यादा देखोगे. This gives you, even in an intraday time frame, आप sell trade देखोगे. वैसे ही अगर 20-50 is bullish on a 2-hour time frame, आप intraday में भी bullish trades देखोगे. So आप trend के हिसाब से भी trade कर सकते हो when it's 20 and 50. If I keep on changing the EMAs, वो फिर बहुत it becomes a little confusing. So I prefer to follow 20 and 50 if I'm going to follow a EMA. But again, a disclosure, I do not trade based on any indicators or EMAs. This is only for people who get confused और जिनको understand करने में दिक्कत है कि long जाना है कि short जाना है. इसीलिए आप larger time frame पे अगर bearish है, like on a 2-hour time frame, if it is bearish, which is already confirming that it is bearish, then on an intraday time frame also आप bearish trades ले सकते हो because you are in the direction of the trend. It will give you better results when you are in the direction of the trend. Again, ये याद रखिए, whenever it is far away from the EMA, it will go back to touch the EMA. वापस negative है तो वहां से वापस गिरेगा. तो याद रखिए कि whenever it is near the EMA and if the major trend is bearish, look for bearish trades and you can keep a small stop loss and take an entry.
Can we use 20 and 50 EMA on a 2-hour chart for positional? See, positional entries again. I would always say that you have to look at the indicators are only something that is going to give you an additional confirmation. Indicators are not something based on which you can trade. They are only for additional confirmations. So if you're going positional based on a chart, you have to also have a broader technical view in place. Then आप indicators को additional support के लिए use करोगे. Just by indicator, I will not suggest to go on a positional trade. You have to also know your technical analysis. Okay. Any other questions on this strategy? Especially people who are on YouTube. I will put the recording so you can watch it again. So some people have got a doubt कि levels क्या है करके. आप वापस मैं YouTube में डालूंगी, इसको लाइव करूंगी तो आप देख सकते हो levels क्या है. Yeah, I will share these levels. मैं ACC का और अंबुजा का levels. I will put this in the on YouTube. आप देख सकते हो वहां से. Okay, let's restrict our discussion to what we have decided. So this is specifically for intraday traders जिनके लिए difficulty होती है to understand whether it is whether it is a buy or a sell. Let's restrict the discussion to that. Otherwise बहुत लंबा चला जाएगा video. Okay, so any questions on this intraday strategy? Because ये बहुत बार लोग पूछते हैं, हर लाइव में बहुत बार लोग पूछते हैं कि इसको हम कैसे ट्रेड कर पाए. Now again हमारे जो इसके साथ आपके जो टेक्निकल्स है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा डेटा बता रहा है कि नेगेटिव है, सो these are my actual डेटा पॉइंटर्स. तो अगर मेरा डेटा क्लियर कट बता रहा है कि these are the resistances, market is going to fall, इसके साथ साथ मैं अपना अगर 20 और 50 डे मूविंग एवरेज इसके साथ लगाऊंगी, so that gives me a confirmation कि I'm on the right direction. Again, my intraday GAN levels जो index के हैं, if these give me a confirmation, ये जो magic level है, मेरे targets है, greed levels है, इसके साथ साथ अगर मैं अपना 20 और 50 add करूंगी, तो that will give me a additional confirmation. Similarly, मेरा stock के जो levels है, again my intraday GAN stock levels, इसके साथ साथ अगर मैं अपना 20 और 50 को add करूंगी, so this will give me an additional confirmation. So additional confirmation है ये जो 20 और 50. जिन लोगों के पास ये कुछ भी नहीं है, आप बस अपना additional confirmation, मतलब आप खाली इंडिकेटर के साथ जा रहे हो, आपके लिए again the indicator will work. I'm not saying the indicator will not work. Indicator will work, but then you have to be very strict with your stop losses. आप आपके stop losses को लगा करके उसमें trade करना पड़ेगा. Then that will that will be something that will help you. So this is, I always keep saying indicators are additional confirmation tools. तो अगर आपके पास हमारे levels हैं, if you know how to read OI data, if you know the AstroGAN level that we share, intraday level that we share, या फिर आपके पास अगर magic levels है हमारे, वो सबके साथ आप ये additional confirmations लगाइए and you can take a trade. Okay. So any questions guys on this? I hope this will be helpful for you. Trade जब लेना होगा, तो I hope this will be helpful. Any questions on this? Any questions on how to take a trade? The scalping, आप multiple trades भी ले सकते हो, आप scalp भी कर सकते हो, आपको multiple trades भी मिलेगा based on this. Any questions? Okay, time frame is 15 minutes. आपको इंट्राडे में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करिए. 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ यू विल बी एबल टू डू इट. अगर आप ऑलरेडी ऑप्शंस में काम कर चुके हो, आपको आता है, यू नो हाउ टू रीड, अगर आपको ये सब
आता है, then you can go to the 5-minute time frame. Then you can go to the 5-minute time frame. And if you already have our option data, ये हमारा option data है जो हम automated NSE का option data automated provide करते हैं, जिसमें आपको you will get all the resistances and the support and everything. NSE का data है ये. If you are able to take entry based on this, if you have this data, आपको अगर additional confirmations के लिए 5 and 20 and 50 का EMA अगर आपको लगाना है, this will give you additional 20 and 50 will give you additional support. So bullish entry I have already shown you. आपको मैंने इसमें दिखाया था, टाटा मोटर्स में दिखाया था bullish entry. This is a bullish entry in Tata Motors. Same was also there in Bajaj Auto. Bajaj Auto में भी same था, same levels थे. So these are the entries that are there in Bajaj Auto and Tata Motors. So abhi, because these are the only two stocks which are giving you good, which have given you a good upside move, I'm showing you this. But in general आप इसको कोई भी स्टॉक में लगा सकते हो. आप सेल के लिए भी ये यूज कर सकते हो, आप बाई के लिए भी ये यूज कर सकते हो. एंड आपका जो लार्जर टाइम फ्रेम वो हमेशा याद रखिए. आप अगेंस्ट द ट्रेंड अगर जाओगे, जैसे कि अभी आपके लार्जर टाइम फ्रेम में, दैट इज 2 आवर टाइम फ्रेम इज व्हाट आई यूज व्हेन आई से लार्जर टाइम. अगर आप इंट्राडे के हिसाब से है, अगर आपका इंट्राडे है तो आप 2 आवर टाइम फ्रेम का आपका लार्जर टाइम फ्रेम रहेगा और 15 मिनट या 5 मिनट आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम रहेगा. सो 2 आवर टाइम फ्रेम में अगर कोई भी स्टॉक अगर बुलिश है तो उसका बुलिश ट्रेड्स ढूंढिए आप. और 2 आवर टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स बेरिश है तो आप बेरिश ट्रेड्स ढूंढिए इंट्राडे में. इफ यू गो अगेंस्ट द ट्रेंड आपके पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे. पोजिशनल एंट्री आई टोल्ड यू, पोजिशनल के लिए अगर आप डे टाइम फ्रेम अगर यूज कर रहे हो तो पोजिशनल अगर कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉसेस एंड आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए. दीज आर ओनली एडिशनल कंफर्मेशंस. इसीलिए आई एम टेलिंग यू यूज इट इन इंट्राडे, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं. You have to understand your you need to understand your technical analysis for a positional trade. इंट्राडे में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम इंट्राडे में था, इसीलिए मैं आपको इंट्राडे के टाइम फ्रेम दिखा रही हूँ. बिकॉज इंट्राडे में कैसे यूज करना चाहिए, कैसे उस पे ट्रेड करना चाहिए, ये काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था. अगर आप ये वाला ट्रेड देखोगे, इफ यू सी एलसी का ट्रेड, हर बार देखिए ये नीचे आता है, फिर वापस रीटेस्ट करता है 50 को, फिर वहां से गिरता है, फिर रीटेस्ट करता है 50 को, वहां से गिरता है. तो अगर कोई स्टॉक बेरिश है वो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम मल्टीपल एंट्रीज देगा. एवरी टाइम इट विल गिव एंट्री. अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक अगर बेरिश है तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आपको मल्टीपल आपको स्कैल्पिंग एंट्रीज मिलेगा. दिस इज हाउ यू विल स्कैल्प बेस्ड ऑन एन इंट्राडे टाइम फ्रेम. Okay, use whatever is your whatever is comfortable to you, and you can use that. But this is something that is normally used. So I took this up in the session today. This is something normally if I am on confusion regarding a stock, this is what I look at. So that's the reason I've discussed this with you. आप लोगों में आपको जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो. That is not a problem. Whatever is your confirmations that you use, you can continue to use that. This is specifically for people who have doubts. पता नहीं चल रहा है. हर लाइफ में यही confirmations, यही questions किसी के होते थे कि we do not understand how to use these levels because long जाना है कि short जाना है ये हमें पता नहीं था. So this is the reason I'm showed you this. आप इसको 5 मिनट में भी यूज कर सकते हो if you're a seasoned player. आप 15 मिनट में यूज करिए if you're a new player. आप पहले यूज करिए उसको, you try to understand how you can do it and then आप ट्रेड लीजिए. I do not use Heikin-Ashi candles because I feel that वो काफी देर बाद उसका मुझे सिग्नल मिलता है, so I do not use Heikin-Ashi candles.
If you're comfortable using Hitachi candles, you can use that. सौरभ जी, आपने वो अपडेट किया है? आपने एक्सेल, हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था. हैव यू अपडेटेड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म? जिनको भी ज्ञान सीखना है, वी हैव ऑलरेडी पुट अप द फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने ऑलरेडी डाला हुआ है. आप पेमेंट मत करिए अभी, आप बस रजिस्टर करिए. हर सेशन में ज्ञान के बारे में पूछ के आई विल नॉट बी एबल टू गो फॉरवर्ड. रजिस्टर करिए. इफ आई हैव the maximum number of people in the registration, I will take up the course. Register करिए. We have already shared the forms. It's already there in the group. उसका जो link भी group में है, it is pinned. आप register करिए. Once you register, we will take it up. I still not have the required number of students for GAN. Register करिए. There are links are available. आप register करिए on the link, and then once the number of students are there, we will take it up. Okay. We also have our technical analysis course, जिसके details हमने already दिया हुआ है. If you want to register, if there is anybody in the group who wants to register for the technical analysis, आप वो भी कर सकते हो. Again, don't make the payment right now. Just register. Once we start the class, you can make the payments. All right. So I hope this will solve most of your problems on how to decide whether it is bullish or bearish. ये बहुत common question था कि how to decide whether we have to take a bullish trade or a bearish trade. पहले 2 hour time frame में जाके देखिए. If it is a bearish setup, means अगर 20 moving average is below the 50 moving average on a bearish on a 2 hour setup, then look for bearish trades. Every time it comes closer to the 20, you can take a trade keeping the 50 as your stop loss. Okay. जिनको भी price action आता है, you can use this along with your price action. It will give you good results. All right. Okay. I'm assuming there are no more questions. I'll just wait for a couple of minutes so that people on YouTube can also confirm to me if they have any questions. I hope it's clear. People who are there on Zoom, if you can just message me whether you're clear with the setup. And people who are on YouTube also, if you can just comment whether you're clear with the setup. Thank you. YouTube में जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया सेटअप या फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हो. Those who are there on YouTube. Any questions for people who are on YouTube? If it's clear to you, you can just and जितने भी participants है on YouTube and on Zoom, please go back and like our video on YouTube. अगर all those people who are live on YouTube, if you could just like our video on YouTube, it will be helpful for us. जितने भी लोग YouTube में हैं, if you could just like the video on YouTube, it will be helpful for us also. Thank you. Trading को आप जितना simple रखोगे उतना helpful रहेगा. आप उसको अगर complicate करना चाहोगे, that is the reason I do not use any indicators or anything, because it gets too complicated. The more indicators you use, I'm sure most of you would have noticed it. आप जितना ज्यादा indicators use करोगे उतना ज्यादा complicate होता जाएगा, because एक indicator आपका buy बताएगा, एक indicator आपका sell बताएगा, तो आप confuse हो जाओगे. और confuse हो जाओगे तो obviously आपका trades will not be clear. You will start getting confused on what to do. So keep it very simple. That is the best way to trade. Okay. ठीक है. Thank you so much. Thanks all for joining in, and I request all of you to please like the YouTube videos also. जितने भी लोग live हैं, please like, so that it will help us reach maximum people. और जिनको भी ये दिक्कत है कि how to decide whether it is bullish or bearish, it will help all of them. Okay.
ठीक है, I'm assuming there is no more questions. So thank you all. We'll come back with another session where we can, we'll come back with other sessions where we can have more interaction, where we will be able to guide you. Thank you. Chaliye, thank you so much.